Hello everyone, how are you? It's good to be back on the Sunday morning. I see Raghav is there with a question again. WS Retail. Yes, we'll start with that, Raghav. We have Chahil is there, Ishan, Sanchita, Rohan is there. Very good morning. Not an issue, Diksha. You were not able to attend yesterday. These sessions are recorded. You can see them again. I am good, Smriti. I'm good. How about you? And a happy Sunday to you as well. And it's good that we are studying on a Sunday, which is very rare, but okay. Surya, I see. Hi, Barkatullah. How are you? Anand, Bhumika, Himanshi is there. Sanjay, Rohan. Good, good, good. Good to see you guys. Hey, Jyoti, Darshan is there. Raghav, if you're there to your question, what is WS Retail? Okay, so all these e-commerce companies, which are Flipkart or Amazon or Meesho, they work on two models. Okay, listen to this carefully. Might help you when you're going for interviews for internships or industrial training. So all these companies work on two models. Okay, first is retail. Dusra is called marketplace. Now, retail is something that they sell themselves. अभी क्या होता है? Flipkart or Amazon goes to a Sony or a different brand, and then they tell कि मुझे आपका सामान बेचना है on your website. What is the maximum discount you can give to me? And we will sell your brand. Like Boat का होता है, आपको Boat के headphones मिलते हैं Flipkart पे. So they go to Boat and they do this negotiation and deal with Boat कि आपका सामान बेचना है हमें, तो हम कितना discount दे सकते हैं, आप कितना discount दे सकते हो. That is called retail part. There is another one which is called the marketplace, जहाँ पे all these sellers across India, like you and me, anyone who has access to Flipkart या internet access है, वो जाके अपना सामान डाल सकते हैं and sell that online on Flipkart, Amazon or Meesho, right? That is called marketplace. The WS Retail है. WS Retail is the company or a subsidiary which is the retail part of Flipkart. So Flipkart अपने नाम के अंडर नहीं बेच सकता. It cannot sell in India. There are regulations. Government doesn't allow that because of competition problems. So what they do is उन्होंने एक WS Retail करके Amazon ने रख दिया, या Cloudtail आप देखोगे, Appareo देखोगे. So all these companies they have created to sell those branded products on their website. ठीक है? So this is something that you should know from a commercial perspective, from more of a chartered accountant perspective. We also have Boat headphone. I think a lot of us have Boat's headphone, right? Hey Sagar, how are you? Bala Sanjana is there. Arun, Khushi, Ustad, Asha, good morning, good morning, good morning. Hey Jyoti. Sarvashri is there, Arnav is there. Good, Pranav, how are you? Good to see you again. Sure, Diksha. The question from Diksha is, can I explain the difference between policy content and policy context? Very simple. Okay. Policy context is why do you want this policy? What is the problem that this policy is going to solve? That is called policy context. And how is it going to solve it? The content of the policy is policy content. Okay. Why? What problem is this policy going to solve? That is policy context. And how is it going to solve is the policy content. Okay, you can remember this as simple as that. Hey Devesh, hi Dimple, how are you? Good, good, good. You have boat air dopes, Manvi. That's a cool thing, right? But उसको कितना charge करना पड़ता है? Charge ही करते आधा दिन तो उसको charge ही करते रहो. What else? Any questions, any doubts across the last 4 chapters? We are getting into a fifth chapter, which is organizations facilitating business. थोड़ा सा लंबा chapter है, right? थोड़ा सा खिंचता है ये chapter, but I'll try to figure out how do we rush through this chapter to only give you which is more important aspect from an examination perspective. उस पे focus करेंगे, ठीक? Hey Disya, how are you? Good, good, good to see you. What is repo rate? आज पढ़ेंगे उसके बारे में. I am good, Rabish. I am good. It's rubbish or what do you call it? Rubbish or rubbish? Cool. Any questions, any doubts? Otherwise, I'll straight jump into chapter number 5, जो कि आज हमें पढ़ना है, right? उसमें एकदम से jump करेंगे, समझेंगे कि what are the organizations which are facilitating business? What are these organizations which actually, अभी हम ये chapter 4 में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा, that how is government facilitating businesses in India, right? We have studied how businesses are being held by government through different policies.
Now we will study about different organizations of the government, right? जो government ने बनाई है, different organizations, especially from a policy perspective, which is regulatory policy, to keep a check on the economy, to keep a check on the businesses. They don't want to control the businesses. All they want to do is keep a check on the businesses. Eclectic. हमने eclectic पढ़ा है chapter 1 में. What is eclectic? Rabish, you should have revised chapter number 1. It is eclectic. Awesome. All good, no doubts. That is really good to hear. Raghav, WS detail समझ आ गया. Super. I'm good, Balasanjana. I'm really good. I am doing fine for now. Let's see how the day goes. FIIs are investment banks, more or so. Yes, you can say that. Yes. Eclectic means first chapter that I missed. Please, Ravish, you can go and refer that. I'm not going to repeat concepts. What I'll do is I will let you go and read that context again, read that content again. If you have confusion, then come to us. Okay, spoon feeding nahi karenge hum log. I think that is going to benefit you only. You should go and read that. Confusion hai, come to me. I'm there to help. I'll explain it again, but bina pade mat aao. पढ़ के आओ. If you have a confusion, I'll repeat it. I'll upload chapter 4 notes as well. आज chapter 5 जितना होगा, 4 I'll upload today. I think I'll upload chapter 5 also today, so that you can go and revise what we studied. Okay. Multidisciplinary. Yes, Ravish, your friends are helping. Multidisciplinary is eclectic. Okay, you have great friends on the chat. They're telling you that eclectic means multidisciplinary, combination of different subjects. So your friends are helping. और क्या चाहिए? Okay, so what is the reason for considering moderately low external value of domestic currency as conducive for domestic business? Okay, now think about this. Your country is a developing country. You have to do exports. You have to do imports. You cannot just keep your value very high, right? अब ego में आके कि इंडिया बहुत बड़ी country है, हम डॉलर के बराबर अपना रुपी रखते हैं, that will not help. We need business from the world. We need to do business with the world, around the world, from people across the globe. So essentially what we do is considering a moderately low external value of a domestic currency so that it is easy for external people to enter India, right? अगर मैं आपको अभी बोलूं आपको फ्रांस में जाके बिजनेस करना है, think about this. If I tell you you have to go to France and start your business, you will think यार एक यूरो अपना 80 रुपए का 80-85 रुपीज का एक यूरो है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ये तो 10,000 यूरो बने सिर्फ. और इवन लेस, राइट? 10,000 भी ज्यादा बोल दिया मैंने. 1,000 यूरो, 1100-1200 यूरो में यू कैन नॉट डू बिजनेस देयर, राइट? So the problem is because they're very expensive countries. India has to keep a moderately low external value ताकि लोग तो अट्रैक्ट हो, लोग आए, थोड़ा सस्ता लगेगा तो लोग और आएंगे यहाँ पे बिजनेस करने. That is why we do that. Saima already discussed Nidhi companies will be covered in law. I will not be able to help you here per se. That's more of a law का या accounts में you study. If you're still interested, इस syllabus में it's not relevant. I can tell you that. चैप्टर 3 कैसे लर्न करना है सूर्य? चैप्टर 3 के ऊपर तो 2 सेशंस किए थे कि कैसे पढ़ना है. रीड द क्वेश्चंस एंड देन स्टडी द स्टडी मटेरियल. हो जाएगा. Awesome. Rabish is saying thank you to everyone who explained eclectic to him. So awesome. That's good, Sami, that you revised from the session or the revision class we had yesterday. Cool. Without spending more time on Gappe, let us start with chapter number 5, which is organizations facilitating business. That means certain organizations of the government, right? Certain regulatory. Now, there were 4 types of policies that the government makes. Okay, there were 4 types of policies that the government makes. That was protective, regulatory, supportive, helping, right? What we are talking about in this chapter is it's about the regulatory policy. Okay, our focus in chapter number 5 is around the regulatory policy, wherein certain organizations of the government are helping businesses in the economy. Okay. We'll come to that, teacher. What is CRR, SLR? थोड़ा वेट करना पड़ेगा. आप जल्दी चल रहे हो, सेशन में आएंगे हम लोग वहाँ पे, right? Okay.
So a question to you on the screen is very simple. Okay, there's a very simple question on the screen. Can a business thrive on its own? The answer is no. For a business to thrive, for a business to be successful in an economy, it needs help and support of a strong economic environment. Think about this. If I tell you, I'm just quoting an example on the economic factors that are happening. Okay, if you have to do business right now in Ukraine, okay, listen to this carefully. If you have to do a business right now in Ukraine, is it easy or tough? Is it difficult or it's very easy to do a business in Ukraine right now? What do you think? आसान है, मुश्किल है, possible ही नहीं है. If you have to do business in Ukraine as on date, or आजकल में आपको अगर यूक्रेन में business करना है, is it simple? Is it difficult? What do you think? Okay, I have a couple of answers. People saying tough, very difficult, tough due to the war. That is right. Not possible, very tough, right? Not possible. That is right. Why? Because the economic environment of the country is not favorable to businesses. Okay, the economic environment is not favorable. Let me just start using a marker as well so that we know. It needs help, support from a strong economic environment. और वो यूक्रेन में इस टाइम है नहीं. So for a business to be successful, for any business person to be successful in a country, it needs support from the country's economy. उसको चाहिए कि यार लोग अमीर हों, country में पैसा हो, ज़्यादा help मिले. सरकार gives me easier loans, helps me in subsidies, promotes my businesses, people have money to spend, I can market, I have a fair competition. सब कुछ चाहिए, right? I want a fair competition. I need ease of getting funds from the market. अगर मुझे loan चाहिए, अगर मुझे public से पैसा उठाना अपना बिजनेस करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, it should be easy for me to do that. तभी तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा, right? That is when it will be easy for me to do business in a particular country. और उसके लिए हमें चाहिए some organizations which help in that. I need support from the government to help me thrive as a business in the country, right? तभी तो टैक्स देने का मजा आएगा. अगर मैं 25-30% टैक्स दे रहा हूँ as a person, as a business person, as an individual, I need something in return, right? ऐसा नहीं हो सकता चंदा नहीं दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं. I'm not giving a charity. I'm giving a tax for that facility that I want from the nation, right? So ये सब के लिए, to facilitate this, we have certain organizations from a regulatory to keep a check that everything is fair, everything is easy for the businesses in the economy. ठीक है? This is what the context of the chapter is. इस समझ से, इस basis पे, इस platform what we set in the last 5 minutes, we will study all the organizations based on this. सिर्फ इसको ध्यान में रखना है. ठीक? Okay. Let's get to the main point of the chapter. Look at the chart on your left. Okay. Point of contact facilitators. Okay. Point of contact facilitators. मैं आपको एक दिखाता हूँ. Now, look at this पहले. Okay. Don't. अभी ये वाला ग्राफ देखो पहले. This is an important graph for you to understand this chapter in depth. The things what we are going to study are not very exam oriented. ज़्यादा इसमें से questions पूछे नहीं जाते हैं. It's more of an understanding. इसको फटाफट से 5 मिनट में खत्म करते हैं. Now there are 3 levels of support that a business gets. Okay. Now there are 3 levels of support that a business gets. Number 1 is point of contact facilitators. ठीक है. नंबर 1 पे होते हैं point of contact facilitators. वो क्या चीज है भाई? Point of contact facilitators are other businesses that are helping you to do your business. They are different services, different businesses जो आपको day in day out आपके साथ communicate करते हैं as a business to help you do your business. उनको बोलते हैं point of contact facilitators. नहीं समझ आया? Example दो, अभी देते हैं. Let's look at the second level. That is aids to trade. Aids to trade are certain sectoral involvements. That means कि sector level पे आपको जो support मिलती है, आप किस sector के हो? आप let's say you are in textile sector, you are from education sector, you are from teaching sector, you are from XYZ sector, you are from mining or aircraft or heavy industries or water industry or
FMCG, दैट इज आटा चावल बनाते हो, साबुन बनाते हो, आप किस सेक्टर से हो, उस सेक्टर से रिलेटेड आपको कुछ हेल्प मिलती है टू डू योर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एड्स टू ट्रेड. And finally, the topmost level, the biggest level, is funding and non-funding institutions of the government, which support every business irrespective, of the sector. ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि इसका कहने का मतलब क्या है. ठीक है, लेट्स गेट टू द फर्स्ट वन, विच इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स. ठीक है, लेवल नंबर 1 is point of contacts facilitators. अच्छा जी, ये होते क्या है? Logistics providers, incubators, financial consultants, merchandiser, people who help design your process. सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, क्लासिक, बहुत सिंपल सा. आपने एक छोटा सा सलून खोला. ठीक है, लिसन टू दिस अगेन वेरी केयरफुली, दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड फॉर लाइफ. आपने एक छोटा सा सलून खोला है. ठीक है, यू हैव अ सलून, यू हैव 15 चेयर्स, काफी अच्छा खोला है, प्रीमियम खोला है. ठीक है, यू हैव ऑल द हेड मसाजेस, यू हैव हेयर कट्स, यू हैव शैम्पूज, यू हैव नेल आर्ट, यू हैव मेकअप स्टूडियोज, यू हैव दिस एंड दैट एंड ब्राइडल मेकअप, सब कुछ आपने बहुत ही अच्छा आपने एक सलून खोला है. ठीक है, नाउ coming to that, listen to all the points carefully, Arnav. Before the questions, listen to the concept. You opened a saloon. अभी आपको क्या चाहिए दोस्त? खोलने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए incubators. You want early stage mentors. You want people who can guide you कि यार इस लोकेलिटी में नहीं, इस लोकेलिटी में खोलो, यहाँ पे खोलो, ये सर्विसेज दो, ये प्राइसिंग रखो. You want your mentors, okay? You want mentors. You want people who can guide you, who are experienced. आपको उनकी मदद लगेगी, right? These are your point of contact facilitators. The people who are helping you day in day out very closely. Logistics provider. आपने सलून खोल लिया, आपको चेयर्स खरीदने हैं, आप चेयर्स जिससे खरीदने जा रहे हो, दैट इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर. दोज काइंड्स ऑफ बिजनेसेस जिससे आप अपनी डायरेक्ट सप्लाई ले रहे हो, दोज काइंड्स ऑफ बिजनेसेस जिससे आप अपनी डायरेक्ट सप्लाई ले रहे हो. आप किसी से शैम्पूज खरीद रहे हो, किसी से होलसेलर से आप चेयर्स ले रहे हो, आपने किसी से डिजाइन किया है, किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुला के अपना पूरा सलून डिजाइन करवाया है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को आपने हायर करके प्राइसिंग करवाई है, और जो टैक्सेशन, रजिस्ट्री, इनवॉइसिंग कैसे होगी, व्हाट विल बी माय बुक कीपिंग, व्हाट विल बी माय टैक्सेशन, हाउ डू आई प्लान, लोन कैसे लूं बैंक से, सारी प्लानिंग करी है एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने. ऑल दिस प्लानिंग इज डन बाय अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट फॉर यू. all these people are your point of contact facilitators for a business, right? जो आपको day in day out आपके business में मदद कर रहे हैं, those are your point of contact facilitators. Angel investors are people who are investing in your business at very early stage. आप एक आइडिया लेके जाते हो, बोलते हो सर मेरे पास बहुत पैसा है, मैम मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, आपके पास पैसा है, प्लीज इन्वेस्ट इन माय बिजनेस, आई विल मेक गुड प्रॉफिट्स एंड आई विल गिव यू ग्रेट रिटर्न्स ऑन दिस बिजनेस, प्लीज इन्वेस्ट इन माय बिजनेस. These people who are taking bet on your dreams are called angel investors, okay? People who are betting their money on your dreams are called एंजल इन्वेस्टर्स. ठीक है, वो लोग, उनसे अगर आप पैसा उठाते हो, इट बिकम्स ईजियर. दे आर योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स. दे आर हेल्पिंग यू टू स्टार्ट योर बिजनेस. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स. लेवल नंबर 2 पे आते हैं, जो कि एड्स ऑफ ट्रेड है. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स सबके लिए नहीं, आपके बिजनेस के लिए स्पेसिफिक पीपल हु आर हेल्पिंग योर बिजनेस आर योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स. Aids to trade are general development in the city or the state where you're living. Let's say you start a saloon in let's say name any city. Let's say you're in Bangalore. ठीक है, अब बैंगलोर में आप एक सलून खोलते हो. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स आपको मिल गए. यू गॉट योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स, द इंटीरियर डिजाइनर, द फाइनेंशियल कंसल्टेंट. आपने एक सलून खोला है, सब कुछ आपका हो गया है. बट देयर आर रोड्स, देयर आर सोसाइटीज जहां से लोग आपके सलून में आएंगे. योर सलून इज नियर टू बिग सोसाइटीज इन बैंगलोर, जहां पे बहुत अच्छे सैलरीड इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर्स, ऑल दीज रिच गर्ल्स एंड बॉयज लिव, राइट? आपने वहां पे सलून खोला है. नाउ दिस इज योर सेक्टोरल involvement. That means that sector, your government has done development in that area, the government has done development in that sector. Transportation
एजुकेशन है, सड़कें हैं, लोगों के पास पैसा है, प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, वहां पे जॉब्स हैं लोगों के पास, देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज, सो देयर पीपल आर मेकिंग गुड मनी, दैट इज क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर योर बिजनेस टू बी सक्सेसफुल, right? All these conditions around your city, all these conditions around your business have been developed by the nation, right? Which is actually helping you to dream about your business to be successful, right? आप किसी गांव में जाके ऐसे सैलून खोल दोगे तो शायद you will not be that successful, because that kind of aids to trade, help to do business, aids to trade, help to do business नहीं है वहां पे, right? But in a city like Bangalore में आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी to do your business, right? That is sectoral involvement, कि सरकार की तरफ से, नेशन की तरफ से there has been development which is pushing you to pursue your dreams of doing your business, which is actually giving you confidence कि सही है यार, बैंगलोर में खोलूंगा तो चल जाएगा, भूखा तो नहीं मरूंगा, right? So that kind of confidence to give to a business person, to an entrepreneur, to someone who dreams to do trade or business, that is aids to trade. ठीक. And level number 3 पे आते हैं. Level number 3 is funding and non-funding institutions. These are the godfather and godmother organizations of the government which are helping every business in the country irrespective. Sector, city, location, geography से bound नहीं है. These regulatory organizations which are either non-funding or funding, या तो पैसा देके help करती हैं या environment बना के help करती हैं. Non-funding institutions, non-funding your facilitation is done by creating an environment which is not very competitive, right? It helps people to do business, to create a sense of confidence to do business. That those are non-funding institutions. And there are others called funding institutions which are actually giving out money, loan deke, subsidy deke, wo paisa deke, they create a sense of confidence for people to do business. And this chapter number 5, is going to focus on these, the non-funding and funding institutions of the government. We'll talk about RBI, SEBI, Competition Commission, IRDI, which is Insurance Regulatory and Development Authority of India, and we'll talk about development banks. स्पेशली हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में, विच इज नेशनल एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग रेगुलेशन, वो पूरा आपको पता चलेगा अभी, राइट? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, विल स्टडी अबाउट दैट. नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई. सो ऑल दीज आर नॉन फंडिंग एंड फंडिंग इंस्टीट्यूशंस विच आर आइदर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर बिजनेसेस टू ड्रीम अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन अ कंट्री, की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है यार, पैसा मिल जाएगा मार्केट से, सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिकॉज द इकोनॉमी इज डेवलपिंग, बिकॉज द सिटीज आर डेवलपिंग, बिकॉज पीपल आर becoming rich, हमारा business भी चलेगा, मैं भी business कर सकता हूँ. A couple of you might be wanting to do business on Instagram or Facebook to sell your gifts or start a bakery or do some creative work or content creation or whatever the case is. Why are you able to dream at such a young age? You're 17, 18, 19, 20 years old and still you're confident कि यार इससे मैं पैसा कमा सकता हूँ. क्यों? Because the economy is such, it is giving you confidence कि आप इंडिया में पैसा कमा सकते हो, right? This is what these organizations, this is what aids to trade, this is what business facilitation is all about. That you get a sense कि यहाँ business किया जा सकता है and you can be successful, right? This is what this chapter is based on. Cool. Okay. Any questions so far? I'll wait for a minute for any confusion, any question that you have from whatever we studied, or we'll go straight forward to the main chapter where we talk about non-funding and funding institutions. I mean, there are many angel investors. There are like, I don't remember the names, or I don't know that there are many. ऐसे नाम याद रखना तो मुश्किल है, right? These are not companies, these are individuals. For example, I'll tell you the owner of Haldiram's is an angel investor. Azim Premji is an angel investor. Ratan Tata is an angel investor. These guys are angel investors. Absolutely, Bhumakar, you're right. Point of contact facilitators are businesses which help in establishment of other businesses. That is right. What else? You hire a property dealer which helps in building a company, proprietor lete aap, and then take some commission, they leave the company to us. Khushi, that is right. Those are point of contact facilitators. You're right.
एग्जैक्टली ज्योति, कहीं भी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल बैंगलोर, आपको कोलकाता में खोलना, आप कोलकाता में खोलो, आपको भुवनेश्वर में खोलना, भुवनेश्वर में खोलो. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. But there are some companies who start in backward areas to develop that area by providing them opportunity. That is right. See, Kushi, the point is they are able to open those businesses in rural areas again because there are those kinds of opportunities being created for them by the economy, right? कुछ opportunity होगी तभी कोई business करेगा. Opportunity दिखती है तो ही कोई business करने जा रहा है, right? And we studied in chapter number 1, charity is not business, not for profit is not business. Business means earning profit, right? अगर आप किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो, that is not a non-economic activity or economic activity में we studied in chapter 1. So it is right, but there has to be an opportunity. Cool. That is good, Rabisha. You're enjoying the concept. Good to know that. Amrunmay, we'll come to that. I'm just on that page, funding. You guys are really excited to go to the next slide always. But ठीक है, अच्छा है, curiosity होनी चाहिए. Cool, Surya. Aids to trade, simple ऐसे समझो. If the city or your state is developed enough, that is an aid to trade for you. Your government has done a good job if you have an opportunity to start a business in your state or city. ठीक? That means your government has done a good job and it is an aid to trade. It is an help for you to do business. अच्छी बात है, वही आपको help कर रहा है business because there is development in that area. उसको सिर्फ ऐसे समझ सकते हो आप. पहला न्यू क्लासेस तो एग्जाम्स के बाद ही आएंगी दोस्त. अब तो सीधा एग्जाम्स होंगे, उसके बाद नया सेशन आएगा. All clear, Asha? Super. Let's go to the next topic then. This chapter, like I told you, is going to be talking about government institutions. Number 1, non-funding and number 2, funding. दो टाइप के इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला इंस्टीट्यूशन होता है फंडिंग और दूसरा होता है नॉन फंडिंग. नॉन फंडिंग के ऊपर इस चैप्टर में ज्यादा फोकस है. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर इंस्टीट्यूशंस व्हिच डू नॉट गिव मनी डायरेक्टली टू द बिजनेसेस. नॉन फंडिंग पैसा नहीं देते हैं. नॉन फंडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर इंस्टीट्यूशंस व्हिच डू नॉट गिव मनी डायरेक्टली टू द बिजनेसेस, but they help in creating a very favorable environment for the businesses to be successful. Understand very carefully. These do not give money. पैसा बांट के उनको ये नहीं कहते हैं ये लो 5 लाख रुपए धंधा करो फ्री ऑफ इंटरेस्ट, लोन ले लो मेरे से, पैसा ले लो, जाओ बिजनेस करो, ये लो 5,000 रुपए, ये लो 10,000 रुपए. No, they're not doing that. What they're doing is they're creating an environment which is safe. They're creating an environment which is competitive. They're creating an environment which is fair for businesses to operate in. Right? वो एक ऐसा environment बना रहे हैं जहाँ पे businesses feel that it is fair, it is safe for me, it is competitive, and I can also be successful. वो ऐसा business का environment बना के दे रहे हैं. And these are non-funding institutions like RBI. कभी देखें आरबीआई लोन देता हुआ किसी को? आप आरबीआई में जाके लोन मांगोगे, आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा. यू गो टू सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड, दैट इज रेगुलेटिंग द शेयर मार्केट. वो शेयर मार्केट के ऊपर पूरा रेगुलेट कर रही है, चेक कर रही है दैट प्रोबेबली नथिंग इज गोइंग रॉन्ग, स्कैम्स तो नहीं हो रहे हैं, फ्रॉड्स तो नहीं हो रहे हैं, कंपेटिटिव है, लोगों को इजीली फंड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, पीपल आर नॉट स्कैमिंग द जनरल पब्लिक, ये सब तो नहीं हो रहा है, गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा है, वो सब चेक करता है सेबी. सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन of India, is creating an environment that is fair. There is fair competition in the country. People are not using money and power, their political connections to beat competition. ऐसा नहीं होना चाहिए, right? That is what CCI does. Then came IRDAI, which is insurance regulatory. Everything that is happening in the country regarding insurance, be it what किसी भी काइंड की इंश्योरेंस हो, उसका रेगुलेशन, लोगों को क्लेम्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, पीपल आर पेइंग प्रीमियम्स फॉर द क्लेम्स, लोगों को क्लेम मिल रहा है, लोगों को इंश्योरेंस का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट? पीपल फील सेफ इन द कंट्री बिकॉज दे आर इंश्योर्ड और नॉट. मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, जिस भी टाइप की वो इंश्योरेंस ले रहे हैं, आर पीपल और द कस्टमर्स और द बिजनेसेस, स्पेशली बिजनेसेस इफ दे आर टेकिंग इंश्योरेंस फॉर देयर बिजनेसेस, या स्टॉक जल गया, वेयर हाउस में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, मेरे किसी वर्कर की प्रॉब्लम आ गई, इन फैक्ट्री किसी के चोट लग गई कहीं पे,
All these kinds of insurances these businesses are taking, whether their claims are being fulfilled, whether the businesses are feeling safe in the country, that is what IRDA ensures. Okay. And then we'll talk about funding institutions, which are development banks. Development banks is a wonderful concept. Development banks are not normal banks. HDFC, ICICI, Axis, Canara, SBI, ये सब banks हैं. These are public dealing banks. These are not development banks. Development bank अलग ही concept है. उसके बारे में पढ़ेंगे. Be curious about it. We'll cover that as well. It is called development banks. इसके बारे में पढ़ेंगे, मजेदार है. ठीक है. So that is what we are going to cover today is non-funding and funding institutions of government which help businesses. Cool. Okay. Ravish, you will have a date sheet, right? Exam की date sheet आएगी तो मस्त पता चल जाएगा कब है exams. Aid of trade is more of infrastructure, yes. To understand from a broader perspective, yes. Essentially, Avinash, that will make easier for you to understand. It is more infrastructure. सही जा रहे हो आप. Conceptually, yes. Okay. Point of contact, aid or help in success, non-funding, create environment. Bhumika, that is right. You're right. Good summarization. Cool. Samir added marine insurance also. ठीक है. Either the insurance are by the government or private institutions. They have power to eye on both sectors. Both. IRDI पढ़ेंगे इसके बारे में. Good that you're curious. सबके ऊपर इसकी नजर है. सिर्फ पब्लिक प्राइवेट नहीं, हर कंपनी के ऊपर IRDI, हर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इसकी नजर है. Development banks like agriculture banks. We'll study about that. Let's wait and see what is there. Again, Rabish, your friends are really helpful. Manvi is telling you exams are from 14 to 20 December. Boss, अभी तो सबको पता होना चाहिए कब exams. Smriti is telling you, Rabish, that 14, 16, 18 and 20th December ko exams and BCK is on 18th December. Right? That's what I know date sheets are there. I know everything is there, but people who are asking, be very attentive on the website. Bhai, check karo, follow some Telegram pages, keep checking with your friends. Right? ये information तो बहुत जरूरी है दोस्त. Correct. Let's go to understand all of these institutions a little more in detail. ठीक है? चलो. RBI के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले. RBI क्या है? I am not going to teach anything on RBI. I will ask questions to you because I know you what RBI is. You tell me what is RBI? RBI क्या करता है? RBI का काम क्या है? क्यों रखा गया है RBI? Question is to you. Let us see if you guys know. I know you guys know what is RBI, which is Reserve Bank of India. इसका काम क्या है? क्यों बनाया गया है इसको इंडिया में? Tell me. आपके आंसर से पूरा ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा. कॉन्सेप्ट क्या है? 4-5 स्लाइड्स हैं, कंप्लीट हो जाएंगी. एग्जैक्टली. एग्जाम होने के बाद पार्टी क्या, मस्त एकदम गोवा घूमने चले जाना दोस्त. Why is there an RBI in India? RBI का काम क्या है? करता क्या है RBI? It regulates banks, issues notes, okay? It is the banker's bank, regulates money supply, head of all the banks and gives loans to the government. Okay, what else? Great. You guys are going good. Regulate the commercial banks, issues currencies in India, regulatory, okay, prints money, central bank bankers to the bank, authority to issue notes to regulate banks in the nation, RBI prints money, facilitate money currency flow, regulate the commercial banks, okay. What else? Authority to issue notes. ठीक है, अभी तक 3 चीजें समझ आई हैं. Authority to control all the commercial banks in the country, give loans to the government and issue currency. और क्या करता है? Produces coins. ठीक है, currency हो गया. RBI have control in currency. ठीक है, currency हो गया. What else? Keep a check on different banks. हो गया. What else? Supervise working on the bank. हो गया. Control of all the banks. सही है, समझ गए. Make rules. ठीक है, okay. Developing and diversifying what? Give loans to other banks, okay. Facilitate other banks, control currency. समझ गए. 3 major points. What else? सिर्फ 3 बताए हैं.
control of currency, keeping a check on other banks and helping the government with loans. यही 3 repeat हो रहे हैं. और क्या करता है? बहुत कुछ करता है. और controls repo rate and reverse repo rate, which is essentially flow of money in the economy. पढ़ेंगे उसके बारे में. बड़ा ही मजेदार concept है. I'll teach you अभी in next 10 minutes. Okay, keep accounts of the government. ठीक है. Regulate foreign exchange, new addition, good. Control inflation, good. Value of money is defined by RBI, okay. Regulates foreign exchange reserves, open market operations, nice. Custodian of foreign exchange, badhiya. Giving monetary instructions, give all the facilities to the government, like facility given by normal banks to normal people. ठीक है. Wonderful. Let's get quickly to the theory part of it. You all are absolutely right. यही है. अगली 5 slides में यही है. Lender of last resort, keeping a check on the interest rate, fiscal policy, moral. So what is moral suasion, Manvi? That's a new word for me. Control credit, control this, okay. Protects markets, foreign exchange. RBI will protect the market, help government to introduce economic policy. Super. It is the apex body of banking in India. It is the topmost bank in India. It is India's central bank. Okay. Now it regulates, it checks, it keeps a check on the entire banking sector in the country. India का पूरा banking sector is checked or kept on a check by a चौकीदार है. He is the security head of all the banking of the entire banking sector in India. सारे banks को control RBI करता है. ठीक है. Reserve banks affairs are governed by the Central Board of Directors, who are appointed by the Government of India in compliance with Reserve Bank of India Act of 1934. इसका अपना एक act है. ठीक. The role of RBI. What is the role of RBI? RBI का role क्या है? To develop, strengthen and diversify country's economic and financial structure. Maintain economic stability in the country, controls money policy in the country, advisor to the government on economic and financial policies. Government को advise करता है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, right? It advises, does not control, it advises. Represents country in the international economic forums. India को कहीं भी from a banking sector represent करना है तो RBI represent करता है. Develops adequate sounding banking system for the growth of money and markets. ATM machines, UPI, Google Pay, Paytm, ये सब क्यों काम कर पा रहे हैं हमारी country में? Because RBI is digitizing the economy. Because RBI is wanting to develop the country through technology in financial sector, in banking sector. आपके फोन पे पूरा बैंक है, आप एक क्लिक में पेमेंट कर देते हो, शेयर्स खरीद लेते हो, ट्रांजैक्शन कर देते हो, स्कैन कोड लगा के पैसे भेज देते हो, स्कैन दिखा के पैसे ले लेते हो. सब बैंकिंग सेक्टर का काम है. Everything is supported, everything is represented, everything is actually approved by RBI. ठीक है. It is done by RBI. It is facilitating businesses. सोचो बिजनेस के लिए कितना आसान हो गया है अब ट्रांजैक्शन करना. बैंक में जाके चेक डिपॉजिट नहीं करना, लाइनों में खड़े नहीं रहना है कि कैश डिपॉजिट करेंगे, रिसीट भरेंगे, डेट गलत डल गई, टाइम गलत डल गया, चेक बाउंस हो गया. The concept is gone. We are digitizing. Everything is being looked from a future perspective. That is what RBI is doing. That is what RBI is helping businesses with. It is a friend, philosopher and guide to commercial banks. HDFC, ICICI, SBI, Canara, Punjab, जितने भी बैंक है इंडिया में, उनका friend है, उनका philosopher है, उनका guide है RBI. This is what you should do. This is what you should not do. This is how you should do, right? It tries to control inflationary trends, the value of money. Foreign exchange को control करता है, देश में inflation को control करता है, right? It has certain tools and concepts which essentially I'm not sure if you guys know, but a really interesting concept, how it controls inflation, how it controls foreign exchange. If you want, I can cover
cover that sometime after if we have time. Last के 5 मिनट I can explain you with examples कैसे करता है, बहुत मजेदार है. Otherwise, if you're interested, YouTube पे जाओ, 5 मिनट की videos में they explain everything. How does a central bank control inflation? How does a central bank control foreign exchange? मजेदार concepts हैं बहुत. Okay. Number 9, channelizes credit in priority sectors because it is a friend, philosopher, and guide to commercial banks. Because it is a friend, philosopher, and guide to commercial banks, it has the power to channelize credit in priority sectors. अब इंडिया क्या बोलता है? Let's say, look at the example. Indian government or India feels that a lot more development needs to be done in the northeastern states of India, the 7 sisters of India. वहां पे अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है. अब तो काफी ज्यादा हो गई है. I'm talking about 10-15 years back. There was a policy when the government thought that यार यहाँ पे क्यों नहीं businesses खोल रहे हैं लोग. Everyone is opening businesses in Punjab, UP, in Karnataka, तमिलनाडु में लोग खोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में खोल रहे हैं. नॉर्थ ईस्ट में जाके कोई बिजनेस क्यों नहीं खोल रहा है, right? So government thought कि why not? Why shouldn't I push businesses to go and start their business in northeastern states? So it went to RBI. RBI से उसने advice ली. Advisor to the government है. उसने RBI से advice ली कि दोस्त क्या किया जाए मुझे बताओ. We want to develop the northern states, northeastern states also for business. तो क्या करें हम? तो उन्होंने क्या बोला? RBI said कि let us give easier loans. So any business who wants to start their business in northeast will give 10% discount on interest rate. ठीक है, ऐसा हम पुश कर देते हैं. एंड आई विल टेल ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया because I am their friend, philosopher, and guide. I control the monetary policy. I have the power to control these banks, to regulate these banks. I will go and tell them to do so, and they will respect and they will agree to what I say because I am the head of the banking sector. So RBI went and told to HDFC, ICICI, Axis को, SBI को, पंजाब नेशनल को, कैनरा को, सबको फोन उठा के बोला दोस्त अगर कोई भी बिजनेस नॉर्थ ईस्ट में जाके बिजनेस खोलेगा तो आप 10% डिस्काउंट दोगे इंटरेस्ट रेट पे. All the banks said, okay sir, as you say, you are the head of the banking sector, we agree to you, we accept whatever you say, this is for the betterment of the country, we'll do that. Channelizing credit in the priority sectors like agriculture or export or MSMEs, जहां भी जरूरत हो, it has the power to channelize money, channelize credit in the economy to those sectors. कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करो तो सारे बैंक्स को फोन करेंगे कि एग्रीकल्चर वालों को, ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर और द फार्मर्स, इनको आप इंटरेस्ट 2% कम दोगे. अभी 8% इंटरेस्ट आप 6% पे दोगे इनको. ठीक है, जैसे ठीक है हम दे देंगे, जैसा आप बोलो वैसा हम कर देंगे बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द बैंकिंग सेक्टर. Right? This is what RBI does. This is what role of RBI is. Cool. Now, the next thing is a question. Basic question about. Read the question very carefully and then answer. बड़ा ही basic question है वैसे तो. You should know. अभी पढ़ा है हमने या आपने पढ़ा होगा बुक में. Let's see if you can answer this. Absolutely, Khushi. That is how you can relate that government provides some benefits for rural sectors or backward areas. Kushi, why we say RBI is the root of the economy? क्योंकि सारा पैसा वहीं से flow हो रहा है, right? All the decision making related to economy, to the money, RBI से ही आ रहा है. Awesome. 99% of you say true, and the answer is true. It was originally privately owned, but after nationalization, it was fully owned by the government of India. ठीक? It was privately owned by the British. It was privately owned by the British. And then जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, नेशनलाइज हो गए, हमें रिपब्लिक बन गए हम लोग 1949 के एंड में, 1950s में, बिकॉज जनवरी में हो गए थे ना. सो वाज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कूल. ओके. फंक्शंस ऑफ आरबीआई. फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है? वो तो था रोल. आरबीआई करता क्या है, बट करता कैसे है? रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई करता क्या है? फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई ये करता कैसे है? आरबीआई करता क्या है और आरबीआई करता कैसे है? नाउ वी विल अंडरस्टैंड आरबीआई ये करता कैसे है. ठीक है. नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली अगेन. नंबर 1,
issuer of currency. Issuer of currency. That means देश में जितनी भी currency है, whatever currency we have in the country is issued by RBI. RBI issue करता है उसको. 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 का, 10 का, 20 का, 100 का, 250, 500, 2000. Whatever notes are there, the issue power, only RBI can print and issue the currency in India. ऐसा नहीं है कल को छगन लाल जी अपना चांदनी चौक में दुकान खोले, मैं भी करेंसी प्रिंट कर रहा हूँ. No, you cannot do that. Number 2, bankers bank. Bankers bank. It controls the commercial banking system under the Reserve Bank of India Act. Requires banks to maintain CRR. Assists scheduled banks and cooperative banks through discounting eligible bills, loans, and advances. Conducts inspections and asks for returns from banks to regulate and maintain the trust in banking system. तो इसका क्या मतलब है? ये तो ज्यादा इंग्लिश हो गई, right? Correct. हाथ से ही बना देते हैं लोग, except 1 rupee coin, right? There is a mint in Pune, I think, that issues coins. That is a different thing. KBC question tha ye. I don't know if you have ever seen, I think 5-6 years back, this was a question in KBC also. Okay. Now, I am talking about the bankers bank. Bankers bank का मतलब क्या है? Whenever, I think, if you go for articleship in audit, अगर आप audit में जाओगे, I have done this. If you go for bank audit में there is a big form जो RBI CA से भरवाता है. RBI CA who is doing a bank audit उससे फॉर्म भरवाता है कि बैंक सही चल रहा है नहीं, is money there, is inventory being checked, the processes are right, loans are not fraudulent, there is proper documentation for loans, लोग सही में घर गिरवी रख रहे हैं, is there mortgage percentage क्या है, क्या percentage पे interest rate मिल रहा है, what is the commission, सब कुछ एक chartered accountant audit करता है, and it fills a form, right, which is a LAFAR, long form audit report. We call it LAFAR. ठीक है, आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में. And then there is a MOC, Memorandum of Changes, जो RBI के फॉर्म में भरना पड़ता है कि बैंक सही काम कर रहा है या नहीं, right? It conducts inspections and asks for returns from banks. It keeps a check. कोई scam ना हो रहा हो, कोई धांधलेबाजी ना हो रही हो. Is everything should be fine and fair because it is the money of the general public that the banks are dealing in. देश की आम जनता का पैसा है भाई बैंक में, वहां पे गड़बड़ नहीं हो सकती, right? It keeps a check on that. It has to keep a check on that क्योंकि आम जनता का पैसा है. If the आम जनता is not trusting the banking system in the country will collapse. कल को मैं बोलूं आप HDFC बैंक में अपने 10,000 रुपए डिपॉजिट करो और अब कोई भरोसा नहीं है कल आपको वापस मिले या नहीं मिले, वो उनके पास रख दी तो उनके हो गए. ये बॉस क्यों, फिर मैं घर में रख लूंगा, बैंक में क्यों रखूंगा, घर पे रख लूंगा. तो बैंकिंग सिस्टम का ट्रस्ट इज व्हाट RBI इंश्योर्स कि भाई होना चाहिए, एंड उसके लिए इट कीप्स चेक्स ऑन द बैंक्स, राइट. नंबर 3, बैंकर टू द गवर्नमेंट. अब जैसे आप अकाउंट खुलवाते हो HDFC में, एक्सिस में, ICICI बैंक में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन्स इट्स अकाउंट्स इन RBI. RBI के अंदर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट होता है. इट मैनेजेस पब्लिक डेट, ट्रांजैक्ट जनरल बैंकिंग ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स. स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स भी RBI में खुले होते हैं, ठीक है. इट सेल्स ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द सिस्टम. जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, सरकारी बॉन्ड्स आते हैं कि सरकार पैसा लेना है जनरल पब्लिक से, वो पैसा उठ के भी RBI में जाता है, right? It sells treasury bills on behalf of the government. It makes advances to central as well as state government. जो loan देते हैं, right? If central government, let's say the Indian central government says, I give 10,000 crore loans to Gujarat government. कहाँ से दे रहे हो? RBI दे रहा है. RBI का बैंकिंग सिस्टम दे रहा है, वो SBI के अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, right? It's not being transferred through SBI or HDFC. RBI, right? It makes advances to central as well as state governments, advice to the government of financial as well as economic issues that we were talking about, right? Inflation, foreign exchange, इस सब के बारे में it is an advisor to the government, right?
It is banker. Number 3 function of RBI is it is banker to the गवर्नमेंट. CRR, SLR क्या होता है अभी आएगा, आगे पढ़ेंगे. नंबर 4 कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. देश के पास जितने भी डॉलर्स, देश के पास जितने भी यूरोस, देश के पास जितने भी पाउंड, व्हाटएवर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दुबई दिनार है अपने पास, कुवैती दिनार है, व्हाटएवर करेंसीज वी हैव फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, व्हाटएवर फॉरेन एक्सचेंज वी हैव, इट इज ऑल केप्ट विद RBI. It is all kept with RBI, right? It is responsible for the fluctuations of the foreign exchange reserves in India. India का आज अगर currency INR is 82-83 rupees per dollar, RBI is taking conscious efforts. आपको पता है, if you think from a perspective, I'll give you one very cool perspective. If you think from a government angle, India में मुझे ये बताओ, is it a good sign for India? It is a good sign for India, right, to have lower to have a higher dollar rate or lower dollar rate. आज की डेट में is it good for India to have $80 rate or $60-65 rate? क्या बेटर है? मुझे बताओ क्या बेटर है? INR to dollar rate बढ़ा हुआ बेटर है. 82-83 is a good sign or a 60-65 is a good sign? Tell me which is more beneficial for us as a country? Lower. Lower dollar is better. Okay, what else? Bibu has given, Mayank has given. भूमिका, ट्रेजरी बिल्स आर बॉन्ड्स ओनली. ठीक है, दे आर बॉन्ड्स जो हम सरकार बॉन्ड देती है ना कि आप 10 साल के लिए मुझे पैसे दे दो, मैं आपको 10% इंटरेस्ट देता रहूंगा. Those are treasury bills. Arnav says that it is good for exports. That is right. But my question is, it is good for the country to have a higher rate or a lower rate? Good to have a lower rate or a higher rate? Okay. Higher, lower, 60-65, 60-65, 60-65. Okay. Majority of you saying lower is good. I'll give you a counter example. Okay. I think a higher price at the current scenario is better. मुझे बताओ क्यों? I'll tell you why. Okay. Now think about this. All the American or foreign countries are trying to come into India. ठीक है, सारी foreign companies are trying to come into India. सब भारत में आना चाह रहे हैं. Okay, now they're bringing dollars. ठीक, they're bringing dollars for us. वो बाहर से डॉलर लेके आ रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है? the Indian businesses are suffering because when all the companies from the foreign country are coming in India, that means it's high competition for Indian companies. Indian company के लिए तो बहुत high competition हो गया. तो Indian company कैसे लड़ेगी? To cut down the imports, right? अब बाहर से लोग क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान से सामान मंगा लिया, चाइना से सामान मंगा लिया, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, हर जगह से सामान मंगवा रहे हैं, राइट? चलो जी, वेरी गुड. इंपोर्ट को रोकने के लिए, टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस इन इंडिया, इफ यू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज प्राइस, आज अगर इंडियन रुपी 82-83 का हो गया है, द पीपल हु वर इंपोर्टिंग आर फाइंडिंग इट वेरी कॉस्टली टू इंपोर्ट. वो कह रहे हैं यार इतना ज्यादा महंगा हो गया, हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड द गवर्नमेंट इज सेइंग गुड, अच्छी बात है, मत करो इंपोर्ट, अपने देश के अंदर से ही खरीदो, सपोर्ट योर ओन कंट्री. Right? So at the given conjunction, that is how RBI is controlling this. RBI लड़ ही नहीं रहा है. RBI is not even pushing to drop the INR price. ठीक है, बढ़ने दो, जितना बढ़ता है बढ़ने दो, 85-86 तक जाने दो, हम जाने देते हैं, because that will promote more of Indian businesses. That will promote self-sufficiency. आप खुद से सीखोगे, देश अपने आप सीखेगा काम करना, सामान बनाना. The country will learn itself what is to be done. राइट? बाहर से सामान आके बेचना तो बहुत आसान है दोस्त. जर्मनी से सामान लाके इंडिया में बेच दो, बहुत आसान है. इंडिया में वो सामान बना के दिखाओ. दैट इज व्हेन योर इकोनॉमी विल ग्रो. तभी तो आप सेल्फ सफिशिएंट बनोगे, आत्मनिर्भर बनोगे.
right? Those are the initiatives that the government is doing. All of this, that is why this is economics is so fascinating, because everything is interrelated. मोदी जी comes on a Sunday, मन की बात में आके बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो. ठीक है, हम कहते हैं वेरी गुड, बन जाएंगे. कैसे बनोगे? सारा सामान तो बाहर से आ रहा है, कैसे बनोगे? ऐसे बनोगे कि जब इंपोर्ट नहीं कर पाओगे तो आप अपने आप बन जाओगे, राइट? Everything is interrelated in economics, and that is where RBI as a banker to the government is helping the government's initiatives. Cool. So custodian of foreign exchange reserves, it controls the foreign exchange reserves and foreign exchange fluctuations as well. Number 5, controller of credit. परचेजिंग पावर लोगों की डिसाइड करता है. परचेजिंग पावर कैसे डिसाइड करता है? आई वांट यू टू आंसर, बिकॉज इट इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. गिव मी एन एग्जांपल बॉयज एंड गर्ल्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस लास्ट सेशन में, मैं ये समझा चुका हूं. आई वांट एनी ऑफ यू हु रिमेंबर्स दिस टू टेल मी how is it a controller of credit and it regulates the purchasing power of the people. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, कुछ भी चलेगा, बट मुझे समझाओ ये होता क्या है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन लास्ट सेशन. देखते हैं कौन समझा पाता है. I'll wait for 2 minutes. आप write down your answer, think what you want to type, take 2 minutes and tell me how is RBI a controller of credit and how does it regulate the purchasing power of people. इस स्टेटमेंट का, इस फंक्शन का मतलब क्या है, कैसे करता है ये? That is right. Okay. एग्जैक्टली टू द प्रीवियस पॉइंट, यू गाइज आर ऑल्सो राइट. इम्पोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डॉलर से ज्यादा रुपीज मिल रहा है. तो लोग इंडिया में बना के बाहर बेचना शुरू करेंगे डॉलर्स में, कि चलो ज्यादा पैसे कमाते हैं, एक्सपोर्टर बन जाते हैं. सो इंडिया विल बी अ ग्रोइंग इकोनॉमी. तभी तो ग्रो करेगी, राइट? क्योंकि लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इम्पोर्ट कम करेंगे, एंड योर इकोनॉमी विल ग्रो. दैट इज वाई अ हायर रुपी इज अ गुड साइन. The question right now, I have answers. Some people have given answers. Okay, if when they want purchase credit, higher controlling credit. Perfect. The banks will increase interest rate. Awesome. Absolutely. You guys are super smart. पता नहीं मैं क्यों इतनी देर तक बोलता रहता हूँ. You guys know everything, right? Controller of credit purchasing power. It tells the banks to increase the interest on loans. Purchasing power कम हो जाएगी. लोगों के लिए लोन महंगे हो जाएंगे, लोग कम खर्चा करेंगे. लोन का इंटरेस्ट रेट सस्ता कर दो, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे. The purchasing power of the people will increase. As simple as that. Super. All of you have given the right answer. For those who have given, right? सभी ने सही आंसर दिया है. Super smart lot of people. सही है बॉस, पता नहीं क्यों ही पढ़ा रहा हूँ मैं इतनी देर से. Cool, let's go to the next one then. ये तो समझ आई गया. Number 6, promotional functions. UPI, digitization, promotional functions. It is promoting UPI, it is promoting digital payments, it is promoting credit cards, it is promoting mutual funds. क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं प्रमोशन का भी काम करता है RBI, राइट? कि बैंकिंग सेक्टर पे ट्रस्ट बना रहे, डिजिटाइज हो जाए सब कुछ. It becomes easier for people. It is promoting all of this, right? Number 7, collection and publication of data. From all the sources, all the information it has from the banks, it collects data and it helps the government to decide or make decisions based on that data it collects from all the banks it has control on. Data की वजह से वो information मिल जाती है और उस basis पे वो लोग decision ले पाते हैं कि what is to be done. Interest rate बढ़ाना है, foreign exchange बढ़ाना है या कम करना है, interest rate बढ़ाना है, घटाना है, किस state में, किस सिटी में, कहाँ पे हमें प्रमोट करना है, कौन सी स्टेट में प्रमोट करना है तो कौन से बैंक से प्रमोट करवाना है, अगर रूरल एरिया में करवाना है तो कौन से रूरल एरिया से करवाना है. ऑल ऑफ दिस
they need data to take this decision. To all these decisions need data, and that is what it does. It collects and it publicly tells people that this is what the data says and this is why we are doing or taking this decision. ठीक? Cool. Very good. ये हो गए अपने functions. 7 functions थे RBI के. That is what we just discussed. Okay. Now, the question now comes is, ये सब तो ठीक है, ये सब तो आपने समझा दिया आरबीआई क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, but how is it helping the businesses? How is it helping the businesses? Okay, there are 4 things on your screen. Read them and tell me. आपको क्या लगता है आरबीआई बिजनेसेस को कैसे हेल्प कर रहा है? हाउ इज, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज The name of the chapter is Organizations Facilitating Business. Organizations Facilitating Business is the name of the chapter. My question to you is, how is RBI facilitating businesses? Simple question hai. Exam question hai. How is RBI facilitating businesses? 4 points on your screen. Explain these to me, please. And your concept will be clear. आपके सामने answer है. How does RBI facilitates businesses? It provides loans. It ensures businesses are getting good loans. That means saste loans, better loans. What else? That is right, Saima. You're right. Purchase power means disposable income. That is right. What is Exim Bank? Export import. Exim ka full form is export import. आरबीआई किसी बैंक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने को कहे और किसी को कम चार्ज करने के लिए भी कह सकता है क्या? बरकतुल्लाह, दैट डजंट हैपन. आरबीआई इज अ वेरी फेयर organization. It's a very fair institution. It doesn't do favoritism कि HDFC को सस्ता दो, ICI को कम दो, तो HDFC will be the market leader. नहीं, वो fair नहीं होगा. It doesn't do that. फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, प्रोवाइडिंग लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बैंकिंग सिस्टम अच्छे से काम करे, इंश्योर्स बिजनेसेस टू हैव बेटर एंड फास्टर ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस, डिजिटल पेमेंट्स हेल्प बिजनेसेस फैसिलिटेटिंग मनी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है. व्हाट एल्स? दैट इज सुपर. राघव, आपके कीबोर्ड पे एंटर दबा रह गया है. आई हैव 10,000 empty chats, right? Interest loan, that is right. Raghav, can you please remove your hand from your enter key? Who controls the price of foreign currencies? Market होती है वैसे, but RBI has some control on that, but it is more of global market driven, Arun. Okay, it helps businesses to give them the loan, okay? Provide low interest for business purpose, okay? मयंक, ये सारी पीपीटीज आई विल अपलोड. आपको नोट्स अगर बनाने, विच इज गुड, बट ये सारी प्रेजेंटेशंस आपको डाउनलोड करने मिल जाएंगी. आप फिर प्रिंट लेके उसको अंडरलाइन कर लो इफ दैट हेल्प्स यू. और इफ यू हैव अ टैब और यू रीड पीडीएफ, तब तो ईजी है. Okay, helping them in expanding their business all over the world by providing loans and help in payment mechanism, launch new schemes, separate accounts of business, digital financial system, favorable business environment. Super. यही आंसर है, करेक्ट आंसर है. नंबर 1, करेंसी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, लोन्स आसानी से मिल जाते हैं. डेवलपिंग फाइनेंशियल सिस्टम, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, डिजिटाइजेशन, स्कैन करो, फाइनेंशियल सिस्टम को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. एंड पेमेंट मैकेनिज्म इजी कर दी है. कहीं से बैठ के, कहीं पे भी बैठ के आप लोग काम कर सकते हो, राइट? पेमेंट मैकेनिज्म्स आर इजी. चेक्स वगैरह हटा दिए, सब कुछ डिजिटाइज कर दिया है, सब कुछ फोन में कर दिया है. सिंगल पैन, आधार से सब कुछ लिंक कर दिया है, राइट? दिस इज पेमेंट मैकेनिज्म. दिस इज डेवलपिंग फाइनेंशियल सिस्टम, right? All of this is what RBI is doing for the businesses. एक business person can have one Aadhaar and they can have 10 businesses, 10 different accounts. सब कुछ आधार से linked है. Simple है उनके लिए. OTP आएगा, transaction करो, OTP आएगा, transaction करो, घर बैठे पैसे कमाते रहो, right? So that is the development of financial system. ऐसा नहीं होगा लाइन में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैंक में बैठे हुए हैं, फॉर्म नहीं आ रहा है, फॉर्म भर रहे हैं, पेन नहीं है, पेन लेके जाना भूल गए बैंक में तो दिन खराब हो गया. All those things are not happening now. Earlier they used to happen.
राइट? अब फॉर्म भरने के आपके पास पेन ही नहीं है, अब वापस घर जा रहे हो पेन लेने, फिर फॉर्म भरने जा रहे हो बैंकिंग में। अभी घर में फोन पे बैठा बैठा खटाखट करके आप पूरा बैंक खोल सकते हो, अपना अकाउंट खोल सकते हो। 15 मिनट्स में बैंक अकाउंट खुल जाता है आजकल। यू गिव योर पैन, यू गिव योर आधार, यू गिव वन रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कहाँ पे रहते हो, बिजली का बिल दो, पानी का बिल दो, बैंक 15 मिनट में अपलोड करो एंड योर बैंक इज ऑन। 24 आवर्स में यू कैन स्टार्ट योर ट्रांजेक्शन, एज सिंपल एज दैट। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, राइट? कूल, लेट्स थोड़ा सा रीड दैट इन डिटेल्स वेरी क्विकली, ज्यादा तेजी से, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, राइट? करेंसी पॉलिसी, करेंसी फ्लो इन द कंट्री, एडुकेट करेंसी, डिमोनेटाइजेशन, रीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, फॉरेन करेंसी फ्लो, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट आरबीआई इंश्योर्स in your country for a business. Payment mechanism, from paper based to now we have digital, everything is digital, digital payments, credit cards hai, online payments hai, UPI hai, sab kuch we have seen, we just talked about. Number 4 was developing financial system, like banking and NBFCs are regulated, right? People have trust, लोगों को पता है यार कहीं भी जाएंगे तो आरबीआई में हम रिपोर्ट कर सकते हैं. So if your bank account is hacked, or if your phone is lost, or if your OTPs are not coming, your OTP चोरी हो गया है, किसी ने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है, आपको क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है. Development of financial system, people have ways to get their money back, people have ways to complain. Banks दादागिरी नहीं कर सकते. People have trust that RBI will help them. So that is development of financial system, right? Then let's go to the next one, which is few important concepts. ठीक है? I think there are few important concepts that we have to talk about. एक second दीजिए. Cool, कहाँ गया मैं? Correct, here we are. ठीक है? A lot of questions coming from what is repo rate, what is reverse repo rate, what is SLR, what is CRR. ठीक? See, open Kotak 811 in just 5 minutes. Absolutely. RBI facilitates business by making everything easy for the businesses to do as a financial sector regulator. Ease of money transfer across the globe, right? Cool. Giving favorable business environment, faster payment solutions. That is right. You all are right. Any questions so far, or can I go to this next very interesting topic, which majority of you want to know, majority of you wanted to understand? What is repo rate? What is reverse repo rate? What is SLR? What is CRR? Can we go to these topics, or are there any questions or doubts that you want me to cover? सी रीमोनेटाइजेशन भी होता है, डिमोनेटाइजेशन भी होता है. रीमोनेटाइजेशन क्या होता है? 20 का नोट चेंज कर दिया, पहले रेड था अब ग्रीन हो गया, राइट? दैट इज रीमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन तो नोट ही बंद कर दिए. न्यू नोट्स लाने को रीमोनेटाइजेशन कहते हैं. Any doubts so far, or should I go to this one? Maybe what is sin qua non? Sin qua non means essential, बहुत जरूरी है. Something which is necessary is called sin qua non. Okay. Awesome. ठीक है. Let us go to first one, which is basis points. ठीक है. What are basis points? 1% of 1%, or if you divide by 10,000, it is called basis point. मतलब क्या है? 1%, सिंपल समझाता हूं. 1% इज इक्वल टू कितने बेसिस पॉइंट्स? मुझे बताओ. बिप्स, बीपीएस, बेसिस पॉइंट्स. ठीक है. 1% इज इक्वल टू कितने बेसिस पॉइंट्स? टेल मी वेरी क्विकली. सारा कुछ पढ़ाएंगे अभी, यही पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं. 1% इज इक्वल टू हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स? फटाफट से बताओ. 1% is equal to how many basis points?
1% is equal to how many basis points? 100 basis points, right? It is 100 basis points. Super. You know 100? Awesome. 1% is equal to 100 basis points. समझ आ गया, सबको पता है. I think everyone knew this. What is repo rate? Basis points, 1% is equal to 100 basis points. If the bank interest is 7.75% and RBI reduces it by 25 basis points, it means 0.25%. ठीक है? The new interest rate of the bank can charge is 7.5%. क्योंकि उसने 25 basis points, 1% is equal to 100 basis points. 1% is equal to क्या हो रहा है पेन को? 1%, ठीक है, 1% is equal to 100 basis points. If RBI reduces 25 basis points, that means it reduced by 0.25%. 7.75 becomes 7.50. ठीक, this is basis points. Awesome. What is repo rate? Repo rate क्या होता है? Repo rate क्या होता है? Take care, Smriti. I hope you are doing well now. And I hope it wasn't a major one that you are today here in the class. So I'm hoping it's not a major one. Cool. What is repo rate? Repo rate is rate at which banks borrow money from RBI. ठीक? Rate at which banks borrow from RBI. Word याद रखना ये from याद रखना दोस्त. बाकी सब तो हो जाएगा. तड़कता फड़कता पिंक रख लेते हैं, right? I don't know what this pink is, but ठीक है. The rate at which banks borrow from RBI is called repo rate. Full form है इसका, पता है क्या? इसका full form है repurchase rate. वाह, repo rate का full form is repurchase rate. It is the rate at which banks borrow money from the RBI. RBI से borrow करते हैं पैसा. That is called repo rate. The rate at which banks borrow from RBI is called repo rate. ठीक है? What is reverse repo rate? Reverse repo rate उसका उल्टा है. Rate at which banks deposit money with RBI is called reverse repo rate. ठीक है? अगर HDFC को RBI से लोन लेना है तो वो रेपो रेट पे लेगा. अगर HDFC को RBI से लोन लेना है तो वो रेपो रेट पे लेगा. अगर HDFC को RBI में पैसे अपने डिपॉजिट करवा के रखने हैं तो वो रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट कमाएगा. HDFC will keep, let's say HDFC will keep some money in RBI, it will get some interest. उसने अपना पैसा RBI के पास रखा है, वो कहेगा ठीक है मुझे इंटरेस्ट दो आप. So RBI उसको जो इंटरेस्ट रेट देगा that is called reverse repo rate. But if HDFC goes and takes loan from RBI, that interest rate is called repo rate. ठीक? Now, which of these two will be lower? मुझे बताओ. Will repo rate be lower or reverse repo rate be lower? इसमें से दोनों में से कम कौन सा होगा? Which will be the lower one out of these two? We'll come to that. What is bank rate? बैंक रेट वो है जिसपे बैंक से आप बोरो करते हो, वो बैंक रेट होता है. द रेट एट विच यू एंड मी बोरो फ्रॉम द बैंक, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. विच ऑफ दीज टू विल बी लोअर? क्वेश्चन कुछ और है. रेपो कम होगा, रिवर्स रेपो कम होगा? रिवर्स रेपो कम होगा, राइट? Majority of you are saying reverse repo rate will be lower, and that is right. Obviously ऐसे ही तो होता है. लोन महंगा मिलता है but डिपॉजिट में पैसा कम मिलता है, and that is what the stories for repo rate and reverse repo rate as well. SLR, statutory liquidity ratio. ठीक है?
ratio of liquid, remember this, you have to remember this, ratio of liquid assets to total deposits with the bank. So RBI tells all the commercial banks to maintain an SLR. RBI tells all the commercial banks to maintain an SLR, which is ratio of liquid assets to total deposits with the bank. Okay, ratio of liquid assets to total deposits with the bank. It is called SLR, statutory liquidity ratio. Liquid assets are assets that can be converted to cash very quickly, like securities of the government, time deposits, etc., FD वगैरह, right? SLR is statutory liquidity ratio, which is a ratio of liquid assets to total deposits with the bank. Okay. Now, liquid assets are assets that can be converted to cash very quickly, like securities of the government, time deposits, all of these. Why is this done? Why is this done? Why is this done? कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों रखते हैं एसएलआर? क्यों रखते हैं एसएलआर? आरबीआई क्यों कहता है कि यू शुड हैव अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल डिपॉजिट्स इनटू लिक्विड एसेट्स? क्यों कहता होगा आपको लगता है आरबीआई ऐसा? व्हाई डज आरबीआई वांट दिस टू हैपन, टू हैव एन एसएलआर विद द बैंक्स? For sudden problems in business. Okay, what else? So that when people come to bank, they can easily get their money. That is right, Mayank. Mayank is absolutely right. Let me hear from others as well. What are their thoughts? So they can manage cash crisis situations for money creation, okay, for credit control, because there is cash needed urgently. Absolutely. What if everyone in the bank, जिसके आप सारे बैंक के अकाउंट होल्डर्स आ जाएं आपके पास और कहें हमारा पैसा वापस कर दो? The bank should have certain amount of money, right? Bank should have certain amount of money into liquid assets so that they can quickly liquidate those assets and give that money to the account holders, right? Fractional reserve banking, which is total deposits can be used to give out loans. SLR requires to keep a certain percentage. Now, for example, if the SLR is 18.5%, ठीक है, 18.5% है अगर SLR, और बैंक के पास और let's say I'll give you an example. Let's talk from an example perspective. ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा 1 मिनट के अंदर. इधर गया मेरा मार्कर, ये रहा. ठीक है. So let's say there is a bank, HDFC बैंक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. HDFC Bank has deposits of 5,000 crores. ठीक है, 5,000 crores के deposits हैं इनके पास. The SLR is, let's say, I'm just taking an example, 10%. ठीक है, 10% SLR है. ठीक. How much money can bank give out as loans? How much money can bank give out as loans? 5,000 crore के डिपॉजिट है, SLR 10% है. How much money can they give out as loans? $4,500 crores. Okay. Darshan and now Himanshu says 4,500. Absolutely, Bhumika, you're right. All of you are right. Who are saying for emergency public cash crisis, that is why you need an SLR. The question is, 5,000 crore के deposits हैं, SLR is 10%. How much money can a bank give out as loans? Majority of you said 4,500 crores. ठीक है? You can give 90% out as loans. 10% आपको liquid assets में रखना पड़ेगा. You will have to keep 10% into liquid assets. Rest you can give out as loans. So the answer that everyone is saying is 4,500 crores. The answer is wrong. Answer is wrong. 4,500 crore नहीं दे सकते आप.
because there will be CRR also. Another 5% वो कहेंगे आप कैश में रखो, right? 10% you have to keep as liquid assets, 5% you have to keep as cash, right? सिर्फ SLR नहीं आएगा. Just telling you the concept. 4,500 is the right answer from an SLR perspective, but essentially RBI says 5,000 में से certain percentage is SLR, another additional percentage is your CRR. SLR is liquid assets की ratio to total deposits, and CRR is the cash to total deposits. Cash to total deposits, right? The ratio of cash to total deposits is what is the ratio of CRR. Now, for a bank to have amount to give out as loans, right? 5,000 crore हैं, SLR is 10%, CRR is 5%. So थोड़ा सा उनको लिक्विड रेशियो में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको CRR कैश रिजर्व रेशियो में रखना पड़ेगा. जो बैलेंस होगा वो लोन में दे पाएंगे, राइट? ये LRR कहां से ला रहे हो दोस्त? अभिजीत, व्हाट इज LRR? सिलेबस में तो नहीं है हमारे. आपको बाहर से पढ़ना है, यू कैन गो टू गूगल एंड स्टडी, राइट? हमारे स्टेटस में LRR तो नहीं है. इज नॉट व्हाट आई रिमेंबर. LR is also liquidity reserve ratio, और उसको SLR LRR एक ही हो जाता है वैसे. Is what I know. I might be wrong. Cash is also a liquid asset. You're absolutely right. But cash is cash. Cash कभी liquid asset नहीं होता है. Accounts में हम पढ़ते हैं essentially that cash is part of liquid assets, but anything that can be converted to cash is a liquid asset. लिक्विड एसेट की डेफिनेशन क्या है दोस्त? लिक्विड एसेट की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इमीडिएटली और ऑन इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड लिक्विड एसेट. एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इज लिक्विड एसेट. तो कैश खुद थोड़ी ना लिक्विड एसेट होता है. कैश तो कैश होता है. दैट इज व्हाई वी से कैश इज किंग. दैट मीन्स जिसके पास कैश है वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज यू हैव इंस्टेंट एक्सेस टू मनी. ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है कि घर आपके पास है तो घर तो आपको बेचने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, राइट? बट आपके हाथ में अगर कैश है आप तुरंत कुछ खरीद सकते हो, राइट? अरुण, लिक्विड का मतलब तो आपको पता होना चाहिए. आई एक्सपेक्ट यू टू नो दिस. ओह, इज इट? आई हैड नो क्लू यार. ये तो मेरे लिए नया, या तो मेरे को याद ही नहीं है. LRR is CRR plus SLR. Okay, that's a new thing, यार. Maybe I just forgot this. अभी now I read, I remember I हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में. That is right. Thanks Rumanshi, thanks Mayank. It's something I just revised today as well, right? SLR plus CRR is LRR, which is liquidity reserve ratio. Full form तो सही थी मेरी. और it's legal reserve ratio. I don't think it's legal reserve ratio तो नहीं हो सकती यार. Legal word तो नहीं होगा, is what I guess. It would be liquidated या liquid reserve ratio होगा या liquidity reserve ratio होगा. Cool. Good. I think it's information for all of us, right? Thank you guys for telling us. Super यार. Can we go to the next one Abhi? Question on your screen. Solve this very quickly. ये अच्छा पता चला LRR का आज. Maybe I missed it, but good. अच्छा है. एग्जाम से पहले ही हमने पढ़ लिया. ये हुआ ना असली चैट का फायदा. All question on the screen. Read it very carefully and solve. Exactly. ऐसे लीगल तो नहीं होगा for sure. लीगल रिजर्वेशन नहीं होगा तो लिक्विडिटी होगा. लीगल रिजर्व है. रुको मैं भी गूगल करता हूं अभी. ऐसे कैसे हो गया? What is LRR? तब तक there is a question on the screen. Solve that.
मैंने तो वो सॉल्व किया हुआ है. लीगल रिजर्व रेशियो है. It refers to the minimum fraction of deposits which the banks are mandated to keep as cash themselves. यार ये तो मजा ही आ गया आज. It's so good to be proved wrong. It's legal reserve ratio. Super. ये तो मिस हो गया. ये तो मुझे डालना चाहिए स्लाइड्स में है ना. For next sessions I'll add this. Thanks. Legal reserve ratio, sum of SLR and CRR. इसमें यही दो है या there is something else also? I think there is something else also. CRR, SLR और कुछ भी डालते हैं इसमें. CRR है, SLR है. Okay. So both of these are legal reserve ratios, and the sum of these together probably forms a legal reserve ratio. Good. ये डालूंगा मैं स्लाइड्स में अब. This is good. डालना चाहिए मुझे एसेंशली. मजेदार. हाँ, उस्ताद वाज राइट. उस्ताद आज तो पार्टी दो भाई हमें. यू वर राइट. I have questioned the answers also. Some of you are also solving the questions, which is right. It's legal reserve ratio. सही बोल रहे थे साहब. It's legal reserve ratio. बढ़िया, अच्छा है. That's right, Darshan. You're right. You're absolutely right. Cool. Can we go to the answer to this question? I see very few people have only answered abhi tak. I'll just wait for another 30 seconds. Quickly solve this and then we'll go to the answer. Cool, let's go to the answer. The answer is 9.5%. कितनों ने 9.5 दिया है? Let's see. Till the time I saw, like, only a few people had given 9.5, 2.5, 7.5, 4.5 भी दिया है. Some people are saying 9.5, 2.5, 2.5, 9.5, 9.5, 9.5. The correct answer is 9.5%. ठीक है. Reverse repo is always less than repo rate. ये तो हमको पता ही है. Logic. If reverse repo is 4%, then repo is 4 plus 3.5, which is 7.5%. Now, if reverse repo is increased by 2%, then repo is 7.5% plus 2%, which is 9.5%. ठीक. The correct answer is 9.5%. I've given the explanation also and I'll upload this so you know what we are talking about. Another question on your screen. Quickly read and solve that. 30 seconds only. This. Lucky your answer is also, so you were lucky with it. जोक मारने का मन कर गया मेरा. Okay, I have an answer from Darshan. I'm waiting for others to answer as well. Quickly, please answer this quickly. You don't want to spend more time on these questions. I want to complete more syllabus. Okay, majority of you are saying B and C के बीच में there's a lot of confusion. What about others? I don't see many of you answering. क्या हुआ? Sunday घर चले गए सब? You left the classes or what? Cool. The correct answer is credit position of the country.
Okay, all scheduled banks are required to maintain a certain minimum cash reserve ratio with RBI. This provision enables RBI to ensure credit position in the country. Credit position संभालने में help करता है ये. Okay, cool. Let's go to the next institution we'll be talking about in chapter number 5, which is SEBI, which is Securities and Exchange Board of India. क्या करता है SEBI? Quickly, let us see who all know this, and I'll see if majority of you know this. We'll be going very fast on this concept as well, on this institution as well. What does SEBI do? Securities and Exchange Board of India क्या करता होगा? Again remember, it is a non-funding government institution. जैसे RBI आम businesses को पैसा नहीं देता है, वैसे ही SEBI भी आम businesses को पैसा नहीं देता है. It is non-funding institution. Right? Thanks, Darshan. I'm happy you are enjoying all these things beyond the syllabus as well. But tell me, what does SEBI do? SEBI का काम क्या है दोस्त? इतना बड़ा institution क्यों बना दिया है? What does SEBI do? It protects interest of the investors, controls stock market exchange, controls stock exchange, regulates security market, regulates stock exchange, controls stock exchange, regulatory body for stock exchange, regulates stock market, it regulates all transactions relating to securities traded, regulate and facilitate share market. ठीक, कुछ चीजें करता है. जैसे अगर आप समझ सकते हो, it ensures that big scams like a Harshal Mehta scam or a big stock market scam doesn't happen again, right? It tries to ensure that scams, frauds are not being conducted in the share market because general public का पैसा लगा हुआ है. Number one. Number two, it helps more businesses to come to share market to get money from general public. वो promote करता है और businesses को आओ अपने shares share market पे issue list करो and get investments from general public so that people feel part of your growth story, right? It helps, it promotes businesses, it creates a safe environment for ensuring people can also get funds. सिर्फ गवर्नमेंट देखो, आरबीआई क्या कहते हैं? लोन दे दो. आरबीआई कहते हैं इंटरेस्ट पे लोन दे दो. दैट इज डेट. आरबीआई इज कंसर्न्ड विद डेट. सेबी इज कंसर्न्ड विद इक्विटी. बैलेंस शीट में दोनों होते हैं. डेट होता है, इक्विटी होता है. डेट पार्ट आरबीआई से रिलेटेड है, इक्विटी पार्ट सेबी से रिलेटेड है कि अपने शेयर होल्डर से भी तो पैसा ले सकता हूं. इफ आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर मनी ऑन इंटरेस्ट, यू वुड हैव स्टडीड इन अकाउंट्स, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th and 12th द ट्रेड ऑफ बिटवीन डेट एंड शेयर इक्विटी, राइट? डेट में आपको इंटरेस्ट कॉस्ट आती है, इक्विटी में यू लूज आउट योर कंट्रोल, राइट? शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोल जाता है, बट वहां पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कम है. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेट, राइट? वो सेबी यहाँ पे इक्विटी की बात करते हैं. सो दैट देयर आर टू वेज टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट. या तो आप बैंक से जाके लोन ले लो, या तो आप शेयर मार्केट में जाके अपने शेयर्स इशू कर दो. पीपल विल बाय योर शेयर्स, दे विल पे यू मनी टू गिव देम योर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए दे गिव यू मनी विच इज द शेयर प्राइस और द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, right? That is what they give. दो तरीकों से पैसा ले सकते हो. SEBI is talking about the stock exchange, the market from where the companies can also raise funds. And it tries to create an environment that all businesses, big and small, feel comfortable, feel fair, feel safe to come to the share market and raise funds for their businesses. ठीक है, वो है SEBI का काम. बड़ा सिंपल है. Okay? And absolutely, all of you are absolutely right. Making rules, controlling, regulating share market, protecting public, trade on equity, right? That is exactly what we all do. In third chapter, I said, tell us about the basis on which we select how to invest in an IPO. Mike, I think we'll cover all these topics in the last session. We have the Gappe session. I'll call that last session as the Gappe session. Aag mast Gappe marenge. How to do articleship, all these stock market things that you have. ठीक है, अभी थोड़ा सिलेबस पे रखेंगे, बट लास्ट सेशन पक्का ऑल दीज ऑफ सिलेबस टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू आंसर, आई विल आंसर वेरी हैप्पी. मेरे को तो बड़ा मजा आता है उसमें. ओके, लेट्स स्टडी अबाउट सेबी. अभी ये तो राइम हो गया. ठीक है, सेबी.
Securities and Exchange Board of India. Okay, again, it has its own act, SEBI Act of 1992. It is governed by the Government of India, established by the Government of India, and governed under the powers of SEBI Act of 1992. ठीक? It is the controller of capital issues, which was before SEBI. So there was a company. I remember this, like my parents or my like elders talking about this, my brother talking about this. There, a lot of his friends used to work in CCI. पहले बहुत पहले, seniors to seniors, like our old cousins there, right? So controller of capital issues was a regulatory authority before SEBI. उसके बाद फिर SEBI आई 1992 में SEBI आई. Okay, now this is an important topic from exam perspective, दोस्त. ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. I can be honest with you that this topic exam में काफी पूछा जाता है, which is the formation of the board of SEBI. जो SEBI का board है, right? SEBI का board है, उसमें कौन कौन होता है and who are they appointed by? There is a chairman. There is a chairman who shall be appointed by the central government. There are two members from amongst the officials of Ministry of Central Government dealing with finance and administration who are nominated by central government. A chairman appointed by the central government, two members from Ministry of Finance which are nominated by the government, right? And that is what this board of SEBI looks like. There was another thing I was talking. Yes, आपको याद है BST में हम लोग पढ़ते थे ऐसे, appointed by the central government, person shall be of ability, integrity, standing in the field of securities market, law, finance है ये, accountancy, economics and administration, etc. Right? The board of SEBI is essentially formed by the central government. A chairman and two members from the Ministry of Finance, which are nominated by the central government itself, right? बहुत बार इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है, so just remember this, right? If you look at the dates, दर्शन, SEBI आया ही 1992 में है. हर्षद मेहता स्कैम के बाद SEBI आया है, राइट? 1992 में स्कैम के दौरान ही सेबी बनाया गया है. ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेबी, ये हमने सबने, आपने ही आंसर दे दिया, मैं नहीं पढ़ाने वाला ये. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड एनी रिलेटेड मैटर्स फॉर ऑल द अबव थ्री. इन तीन से कुछ भी रिलेटेड है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट? नाउ when I say SEBI, it is responsible for three groups of people. Understand this very carefully. SEBI is responsible for three groups of people. Okay, SEBI is responsible for three groups of people. Number one, the issuers of security. Number two, the investors. And number three, the brokers. Number one, the issuers. Number two, the investors. Number three, the brokers. It is responsible, it is responsive, it is regulating three people: the issuers, the investors, and the brokers and mutual funds, essentially. So brokers and mutual funds, दोनों को SEBI is regulating, right? सागर, BST, बिजनेस स्टडीज, आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे 11th-12th में? बिजनेस स्टडीज को हम लोग तो BST बुलाते थे. Okay, SEBI is responsible to three groups of people. Number one, issuer, जो कंपनी के शेयर्स मार्केट में है, investors like you and me, and stock brokers and mutual funds who are actually helping us buy and sell those shares in the share market, right? इन तीनों को रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी SEBI की है. Okay, now it has three functions: quasi-legislative, quasi-judicial and quasi-executive. That means quasi का मतलब होता है somewhat like, ठीक है? Quasi means somewhat like, okay, similar to. So quasi-legislative means it creates regulations in its capacity. Rules बनाती है stock market के. It develops rules of stock market. It has the power to form rules of the stock market.
Number 2 is quasi-judicial. That means it passes rulings and orders in its judicial capacity. इस ये कंपनी आज से शेयर्स नहीं इशू कर पाएगी, ये ब्रोकर को हमने सस्पेंड कर दिया 2 साल के लिए, ये ब्रोकर अब 5 साल काम नहीं कर पाएगा, ये कंपनी शेयर मार्केट में अब शेयर्स नहीं बेच सकती. All of these decisions, all of these judicial decisions or whatever the justice is done, वो SEBI अपनी powers में कर सकती है. Then number 3, you have quasi-executive. That means it can go and investigate. उसको लग रहा है कोई scam हो रहा है. It will send its team to the offices of these companies जहाँ पे इसको लगता है scam हो रहा है. Or some brokers who are turning markets, or brokers who are doing scams or doing fraudulent activities. Not just scams, but any fraudulent, any non-competitive practices हो रही हैं अगर stock market में, तो investigate करना, उसके ऊपर check करना, quasi-executive activities भी SEBI कर सकता है. Right? Okay, Sagar, you had business administration. That is right. So quasi-legislative rules बनाने का power है, quasi-judicial justice करने की power है, और quasi-executive investigation करने की भी power SEBI के पास है. Okay, all these 3 powers SEBI has under its functions. Any questions? I'll wait for 30 seconds. I don't see any responses on the chat. Any questions, any confusions from this, or we go to the next one? Any questions, any doubts? Ask those. नहीं समझ आ रहा है तो आगे तो पढ़ेंगे फिर से, वरना फिर आगे चलेंगे. Cool. Thanks, Lucky. Thanks, Krushi, for saying no doubts. Awesome. I'll just wait for another 30 seconds for others to chat in as well. I don't want any of you to miss out anything that is not clear. The motive is not that. We can proceed. Sama, you did not understand quasi-legislative. Quasi-legislative means rules or policies share market की बनाने की इसके पास power है. SEBI has the power to make rules and policies for the stock market. ठीक है? That is quasi-legislative. Okay, let's go to the next one very quickly. The question now comes is कि भाई SEBI के बारे में पढ़ लिया, but how is it facilitating business? Chapter की heading है Organizations and Institutions Facilitating Business. How is SEBI facilitating business? Right? How is SEBI facilitating business? Number 1, developing India's capital market. अभी आपको पता ही है इतने सारे IPOs आ रहे हैं. A lot of companies are coming to share market to get funding, right? Loans महंगा पड़ रहा है, लोग share market में आके पैसा उठा रहे हैं जनरल पब्लिक से, वो उनको सस्ता पड़ रहा है. Because the Indian capital market is developing. SEBI is taking actions to develop Indian capital market. Right? It facilitates overseas entities desirous of participating in Indian capital markets and vice versa. That means it also allows the foreign institutional investors to invest into share market. Right? Foreign institutional investors जैसे Goldman Sachs वगैरह आके भी तो हमारी market में पैसा लगाते हैं. It facilitates that so that other countries are also excited by Indian market and Indian people are also excited about foreign markets. Right? तो वो पूरा environment बनाना where it creates a global scenario कि बाहर की देश का पैसा हमारी share market में लग रहा है. That is also what SEBI looks after. It is responsible for investors' faith. You and me, who are not very rich, affluent people, we are putting a 10-15,000 rupees or 5,000 rupees per month in mutual funds or 2,000 rupees in mutual funds per month, or we are just investing 1 lakh rupees in our shares, which is like huge for us. It has to be responsible for the investors' faith कि यार ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा मेरे साथ, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये पैसा मेरे को if अगर ज्यादा रिटर्न भी ना मिले जीरो तो नहीं हो जाएगा. Right? So ensuring the investors' faith is there in the functioning of capital markets. So अगर short term में loss हो रहा है but हाँ long term में मुझे profit हो जाएगा. That kind of environment and confidence is what SEBI works on to create that kind of environment. Right? Cool. Responsibility पढ़ रहे हैं. Keshav, we are talking about responsibility only, right? Business facilitation is the actual result of these responsibilities कि उसकी वजह से ही ये कर पा रहा है SEBI,
right? Development of India's capital markets, facilitating overseas entities to invest in India as well. Number 3, responsible to the investors' trust and faith that they can invest in the Indian stock market. उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा है. Long term, short term, you will gain money, right? All of this is how it facilitates businesses in India. Okay. Very simple question on the screen. आराम से 1 mark मिल जाएगा इसमें. It's a very simple question. Solve it. SEBI does not cater to whom of these? Out of these, SEBI does not cater to whom? Which of the following does SEBI not cater to? Government organizations. Majority of you are saying government organizations, and that is the right answer. Government organizations. Cool. Let's go to the next one quickly. I think this is the last one we'll do today. Agla we'll do on next Saturday, right? Competition Commission of India के बारे में पढ़ लेते हैं. Very simple, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसान सा है. Competition Commission of India. नाम पढ़ के आपको क्या लगता है? नाम पढ़ के आपको क्या लग रहा है? क्या करता होगा Competition Commission of India? बहुत simple है, right? I'll wait for you to answer. Okay, I'll wait for you to answer. This was very, very, very easy, right, Saima? I know it was a very simple question. The question now to you is, Competition Commission of India क्या करता होगा? आपको पढ़ के क्या लगता है? Competition Commission of India का काम क्या होगा? I can actually get some funny answers, but let's see. Regulate competition. अच्छा, very simple answer. थोड़ा example भी दे सकते थे आप. Okay. Ensure there is no monopoly. Awesome, Arnav. That's a great point. And the market is competitive to ensure public welfare. Super. Okay. To ensure that there is no monopoly. किसी एक business का राज ना हो. It should be a fair playground for all the businesses to function, all the businesses to work with a healthy competition in the country, right? So that customer को भी मिले, ताकि customer को भी लगे कि यार equal competition है, we have a fair chance to buy. ऐसा नहीं है कि, for example, if you go to PVR, ठीक है? Now what happens is, I'll give you a classic example कि जहाँ पे competition नहीं है वहाँ पे क्या होता है? Wherever there is no competition, वहाँ पे क्या होता है? You go to PVR. PVR में you want to buy popcorns, ठीक है? अंदर आपको popcorn खरीदना है. कितने का मिलता है अंदर popcorn? PVR में 300, 300, 350, 400, 500 rupees for a box of popcorn, right? Popcorn का एक box होता है जो 5 मिनट में खत्म हो जाता है. 350, 400 रुपए का वो popcorn मिलता है, right? Now it is there because the consumer, the customer has no options available. कोई competition नहीं है वहां पे, उसी से लेना पड़ेगा, वही है और कुछ नहीं है. That is the only thing that they have, right? That is the only popcorn vendor they have inside. वहीं से मिलेगा, उसकी मर्जी वो कितना भी प्राइस लगाए, आपको लेना है तो ले लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, right? This is what happens when there is no competition. Now imagine this happening in every industry for every business. ऐसे तो कोई business ही नहीं कर पाएगा. Only the top 1 or 2 mafias will be able to do business. ताकि माफिया गिरी ना हो, ताकि दादागिरी ना हो, ताकि that there is no monopoly, there is no unfair advantage to any one single or a group of businesses. That is why Competition Commission of India was institutionalized. That is why it was created
right? For people to be creative, for people to innovate, for people to come forward and think ki ha, there is a fair chance for me to be successful as well. If I work hard enough, there are opportunities for me, and I will be protected by the big mafias, the big companies, the big players in the industry. I will be protected by them, and I will be able to succeed in my own business. ठीक है, ये काम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का. Cool. Again, when there is no competition, there is no cost reduction. There is only profit making. वही 500 का बेचेगा, 600 का बेचेगा. It would result in reduced cost and wider choice to the customer. जैसे ही competition आएगा, consumer के पास choices आएंगी, and the costs would also reduce, right? The result will be that there will be reduced cost and wider choice to the consumers. A fair competition is essential to achieve this objective. Okay. Cool. Okay, so घर से लेकर नहीं जा सकते क्या? जा सकते सूर्या. Now it's allowed. You can roll your पराठे का रोल लेके आप चले जाओ. Now it's allowed. 400 in Delhi's PVR, but their street 20, right? 20 रुपए के पॉपकॉर्न मिल जाता है. नो, PVR में 400 रुपए का मिलता है. People saying 250 or more. See, that is what happens when there is no competition. It ensures freedom of trade. That is an awesome example. It ensures freedom of trade. Awesome. Okay. Cool. There should be free and fair competition. Exam question है दोस्त, इसको याद रख लेना. कम से कम 6 बारी देख चुका हूँ मैं एग्जाम में question. I have seen this question at least 6 times in examinations. ठीक है? There should be free and fair competition. Because the benefits of free and fair competition are the following. That means question आएगा कि what are the benefits of free and fair competition? Yeah, which of the following is not a benefit of free and fair competition? Answer आपके सामने है. Free and fair competition के benefits हैं encourages innovation, increases efficiency, punishes the laggards, boosts choice, improves quality, reduces cost, and ensures availability of acceptable quality at affordable price. ठीक. Encourages innovation. लोगों को encourage करता है कि आप innovate करो because there is fair competition. Your product will be competitive. आपको कोई रोकेगा नहीं. आप innovate करो, खुल के करो. It increases efficiency because when people are confident that there is fair competition in the market, it will increase their efficiency. It punishes the laggards. That means it punishes those who are lazy. It punishes the lazy businesses. Number 4 is boosts choice, improves quality, and reduce cost. For the customer, it improves the quality, it improves the kind of choices that the consumer has, and it reduces the cost for the consumer. It ensures availability of acceptable quality at affordable price. That means लोगों को value for money मिलना शुरू हो जाता है. When there is free and fair competition, people start getting the value for money. Punishes the laggards means free and fair competition punishes the lazy businesses. अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो कोई बिजनेस है जो इनोवेट ही नहीं कर रहा है, जो बहुत ही लेजी बिजनेस है, उसको तो वो आराम से बैठा रहेगा. अरे धंधा चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्यों इनोवेट करना है? लोगों को क्यों नई कोई टेक्नोलॉजी देनी है? लोग मस्त, मैं अकेला हूं, आई एम द मोनोपोली, right? So free and fair competition punishes these kinds of businesses as well. Okay, this is what punishes the laggards means. Last 5 and 10 year questions. Website say I forgot that link. Yeah, I'll look at that link and probably add somewhere in this slide. Otherwise, I will share that link in the next class. आपको बता दूंगा. Otherwise, I think there are external books also, right? You get these last year question banks. Probably online देखना पड़ेगा. In मेरे ज़माने में तो मिलता था, right? I'm talking like आत्माराम भिड़े now. मेरे जमाने में, बट हाँ मतलब तब तो वी यूज्ड टू गेट दोज बुकलेट्स व्हिच हैड ऑल द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स लाइन वाइज विद आंसर्स, तो बड़ा हेल्प होता था. आज के जमाने का पता नहीं, हमारे जमाने में तो मिलता था. ठीक है, बट आई गेट टू देखता हूँ. इफ आई गेट दिस लिंक आई एड इट हियर और आई लेट यू नो बाय द नेक्स्ट क्लास कि कौन से लिंक से यू कैन गेट पास्ट ईयर के एटलीस्ट 6-7 अटेम्प्ट्स के
let me figure out with senior faculties in the institute. I'll ask them probably if we can help, right? पता करेंगे. I'll get to you. I'll do this help. Okay, cool. Now the act prohibits what? Act free and fair competition को enable कैसे करता है? How does Competition Commission of India ensures कि सब कुछ fair है? Anti-competitive agreements, abuse of dominant position and regulates combinations. It prohibits मतलब does not allow. The Competition Commission of India does not allow anti-competitive agreements. ऐसा नहीं होता कि I cannot get into an agreement. So let's say I am a गोलगप्पे वाला, ठीक है? I am a गोलगप्पे वाला, मेरे सामने एक मोमोज वाला खड़ा हो गया. Listen to this carefully. I am a गोलगप्पे वाला, मेरे बिल्कुल सामने एक मोमोज वाला खड़ा हो गया. I cannot get into an anti-competitive agreement. मैं उसको बोलता हूँ मैं यार तेरे को 5,000 रुपए दूंगा. I am giving you 5,000 rupees. तो यहाँ पे कभी नहीं खड़ा होगा. You cannot sell your stuff. मेरे से 500 मीटर के अंदर 500 meters to the right, 500 meters to the left, 1 किलोमीटर तक तो मुझे दिखना नहीं चाहिए तेरा स्टॉल. 5,000 रुपए I will pay you every month. तू 1 किलोमीटर तक नहीं दिखेगा मुझे, right? We cannot do such contracts. The Competition Commission of India does not allow us to do such contracts because this means गोलगप्पे वाले के पास अगर पैसे हैं तो वो तो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे और किसी को खड़े ही नहीं होने देगा. So that is not a fair competition, right? The consumer should have the option उसको गोलगप्पे खाने हैं या मोमोज खाने हैं, right? सेम जगह पे सब खड़े हैं. The consumer, let the consumer decide, right? आप अच्छा आप एडवर्टाइजमेंट करो, आप पोस्टर्स लगाओ, आप स्कीम्स दो, आप डिस्काउंट दो, that is fair. बट आप एंटी कंपेटिटिव नहीं हो सकते कि यार उसको भगा दो, यहाँ से पैसा खिला के उसको हटा दो मार्केट से. You can't do that. Okay. Abuse of dominant position. Number 2, abuse of dominant. If you are a big company, so if let's say Coca-Cola is making soft drink, a new company comes in saying कि यार I am bringing a new soft drink. Coca-Cola tells everyone, abuse of dominant position is, it tells all the shopkeepers जहाँ पे Coca-Cola या Pepsi रखी होती है, they tell them if अगर आप ये वाली ड्रिंक रखोगे जो नहीं आ रही है तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, राइट? दैट मीन्स दे आर अब्यूजिंग देयर डोमिनेंट पोजीशन टू ब्रेक द कंपटीशन, राइट? अनफेयर हो रहे हैं वो लोग. शॉपकीपर को धमकी देने लग जाएं कि अगर आप उसका सामान भी रखोगे तो हम अपना सामान आपके पास नहीं रखेंगे, फिर आप देखते रहना आपकी दुकान कैसे चलती है. That is abuse of dominant position. You cannot do that. That is not allowed. You can go to jail. That company will have to pay millions and millions of dollars of fine if they do that. Law, act के हिसाब से वो नहीं कर सकते हैं. Number 3, regulates combinations. It prohibits certain combinations which are anti-competitive, right? For example, अगर 2 या 3, there are 3 players. Okay, let's say there are 3 players. And top 2 players combine together to throw out the third person from the industry. I'm just taking an example. Infosys, TCS, Wipro. Infosys, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और विप्रो, अगर टीसीएस और इन्फ्रो आपस में मिल जाएं, टीसीएस और इन्फोसिस आपस में मिल जाएं ताकि वो विप्रो को निकाल दें बिजनेस से, राइट? द कंपटीशन एक्ट विल नॉट अलाउ दैट हैपनिंग. दे विल से यार आप लोग कंबाइन होके यू विल बिकम सच अ ह्यूज कंपनी दैट यू विल नॉट लेट एनीवन एल्स डू बिजनेस, व्हिच इज नॉट अ फेयर कॉम्पिटिटिव लैंड और अ फेयर कॉम्पिटिटिव प्लेग्राउंड फॉर ऑल द बिजनेसेस. आई कैनॉट लेट दैट कॉम्बिनेशन हैपन. वो नहीं होने देगा, वो डील ही नहीं होने देगा. The act will not allow. Wipro can sue those companies under this act. Okay, I'm just giving an example. This is how the Competition Act through the Competition Commission of India ensures कि fair competition है देश में. ठीक है? Cool. You know this, very simple. वही कर रहे थे हम जो अभी तक पूरा बोला है, ये स्लाइड वही बात करे. You can go through this. Okay. एक क्वेश्चन पे आते हैं. यस, नाउ जो हम शुरू में बात कर रहे थे सीसीआई सेबी का, देयर इज आल्सो द बोर्ड ऑफ सीसीआई व्हिच इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का बोर्ड. ओके, सीसीआई कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. बहुत बारी आता है एग्जाम में, सेबी का भी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का भी. सो रिमेंबर दिस. ओके, स्टार मार्क कर दिया मैंने भी आपके लिए, जब अपलोड करूंगा आपको स्टार दिखेगा. सो
remember these points, very frequently asked in examination. Okay. The duty and the functions of the commission is very simple. Promote and sustain competition, eliminate practices which have adverse effect on competition, unfair practices ko hata do, promote karo fair practices ko, protect the interest of the consumers and ensure freedom of trade in the markets of इंडिया. फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए, हर कोई आके बिजनेस कर सके, एक ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए दैट एवरीवन फील्स सेफ एंड फेयर टू डू बिजनेस इन इंडिया. Right? Now, to make markets work for the benefit and welfare of consumer, एक ही पॉइंट को चार तरीके से लिखा हुआ है. Essentially, that is why I'm rushing very fast. एक ही चीज को चार तरीके से स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, but the concept remains the same. Right? Fair and healthy competition, competitive advocacy, implementing competition policies with aim to effectuate and the most efficient utilization of economic resources. Right? That means a playground ऐसा हो that everyone feels competitive, healthy competition हो. Competition होना भी जरूरी है, बट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. किसी को दबा के, किसी को मार के, किसी को डरा के, धमका के बिजनेस नहीं होना चाहिए. It should be a fair, healthy, consumer-centric business that should happen in the country. Right? एक ही बात को 50 तरीके से लिखा हुआ है. Okay? Now, बिजनेस फैसिलिटेटर कैसे है ये तो हमको समझ आ ही गया है. ऑल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल इट्स वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑल इट्स फंक्शंस, ऑल इट्स द एक्चुअल आइडिया ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया is to facilitate businesses, right? The core essence is to facilitate businesses, big and small, new and old. हर टाइप के बिजनेस को एक ग्राउंड देने के लिए कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था by the government of India. Right? Cool. I'll stop this session here today. I think overload हो जाएगा वरना, right? मेरा भी आपका भी ज्यादा कवर हो गया है, बट दिस इज एसेंशियल. इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, आई नो इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, बट इसके बाद अपना सिर्फ IRDAI और डेवलपमेंट बैंक्स बचेगा, विच शुडंट टेक मच टाइम. ठीक है, देन वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, and then we have chapter number 6, which is glossary kind of a chapter. Right? I'm going to end this session now, but I'll spend last 5 minutes as always on any questions, any doubts, anything that you guys want to answer or ask or answer or give a statement or let me know. It is available in the ICI app, the past questions. Darshan has found that, right? You get scanners, right, Sagar? That is what I was talking about. Scanners mil jate hai. You can probably go and figure out scanner milta hai. Scanner is like all the past year attempt questions, and you should totally do that. Scanners are must. बहुत जरूरी है स्कैनर करना at all levels of CA. सिर्फ फाउंडेशन नहीं, इंटरमीडिएट में और भी ज्यादा, फाइनल में तो बहुत ही जरूरी है स्कैनर करना. Great. Thanks, Smriti. Thank you so much. Thanks, Khushi. Thanks, Rika. देखो हमारे जमाने में तो ये आपका दिल्ली में लक्ष्मी नगर में we used to go and buy that, और नियर ITO, अपना वो ITO के पास है ना बुक सेंटर्स, we used to buy that in Delhi. आपकी सिटी में मिलता हो ऑनलाइन खरीदो, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है दोस्त. Amazon पे भी मिलता है, Amazon पे भी मिल जाता है. Exactly, Avinash. So that is a safeguard. That is right. Agreement between two companies is not to hire employees of each other. That is also competitive कि एक का information दूसरे के पास ना पहुंच जाए. Right? That is also part of this. I upload PPTs on this live.ici, right? So this is the website that you have for virtual classes where you go for chat. इसी में downloads भी होता है. जहां पे आप चैट कर पा रहे हो ना, इसी में यू विल हैव डाउनलोड्स में यू विल फाइंड ऑल दीज पीपीटीज अंडर माय नेम, अंडर द सब्जेक्ट नेम आपको मिल जाएगा. स्कैनर का कोई नाम नहीं होता है विभू. आई डोंट नो दिस स्कैनर. यू जस्ट राइट डाउन CA स्कैनर, यू विल फाइंड आउट. आई डोंट थिंक सो देयर वाज अ नेम, उसका नाम ही स्कैनर था. लेट मी जस्ट क्विकली लुक एट द शेड्यूल एंड लेट मी सी. कोई और छुट्टी तो नहीं है फिर से? आई थिंक बिफोर दिवाली वी विल हैव दीज सेशंस नाउ. गिव मी 1 second.
The next session is on next is on 22nd, and then we have 23rd. Okay, so we have another session on next Saturday and Sunday. So I'll see you on next Saturday now. Till then, take care, and thank you everyone who is joined and has been active. I'll see you on the next one. Thanks.